आपको लगता है सर्कल मेरा बन रहा है, आपको लगता है सर्कल मेरा बन रहा है, मेरा बन रहा है। Hello everyone, good morning all of you. Today we are starting our class of the class 11th, work, energy and power. Now our first topic is work. What is work then? First we will explain this one topic, work done. That is as we are applying some force on any object, then some displacement will be take place on any object. Then we will call it work is done. Force on this one, then 25 Newton. Then after applying this one force, then some displacement will be there of this one object. Then in force and displacement, then work is done by this object. So here we can write there work done and some displacement will be there, then we will ds. Okay, meaning of ds that we know about this one, change in the displacement. For example, the 3 kg is there, beta work done, that person is moving in forward direction, as pushing forward direction this one block, work is done. If lifting up and down, if we are asking their work done by this person vertically, then it will be 0 because that pushing this block in forward and backward direction. Okay, so here work done here acting along the horizontal and vertical component of the work is done equal to 0. Okay, for example, we are pushing the wall. आप पुश कर रहे हो वॉल को अगेन अगेन, वी आर अप्लाइंग फोर्स अगेन अगेन, बट देयर डिस्प्लेसमेंट इज 0. क्लियर? वर्क हमने कितना काम किया का मतलब कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद हमें रिजल्ट मिला कि नहीं हुआ, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या करेगा, बॉडी डिस्प्लेस करेगी. इफ डिस्प्लेसमेंट इज टेक प्लेस देन वी कैन से वर्क इज डन बाय दैट बॉडी. ओके, तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है कि हम पुश कर रहे हैं अपनी वॉल को, बार बार पुश किए जा रहे हैं वॉल के ऊपर, फोर्स वी आर अप्लाइंग देयर बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन द वॉल, देन वी कैन से वर्क डन इज इक्वल टू 0. ओके, so here work done we can write their force into your displacement, that is a dot product between them, F dot ds. Okay, both are vector quantity, force also vector quantity, displacement also vector quantity, both are having dot product and their vector quantity dot product, then we can call it work done. So work is done is the product of the component of the force in direction of the displacement and the magnitude of this displacement. Okay, work is done is the product of the component of the force of the direction of the displacement and magnitude of this one displacement. So here we can say product है, किसका product है, ये force है in direction of the displacement, कि हमने देखो force इधर अप्लाई कर रखा है बट बॉडी क्या कर रही है, इधर डिस्प्लेस कर रही है. सो वी विल फाइंड देयर कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? सो हियर फोर्स इज एक्टिंग 25 न्यूटन बट दिस वन एक्टिंग एट दिस सम एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल के अलोंग 30 डिग्री पे हमने क्या कर रखा, उसको पुल कर रहे हैं. क्लियर? बट बॉडी कहाँ डिस्प्लेस कर रही है, बॉडी इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है. योर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज योर ds in this direction. Okay, so we will find there how much component of the force is acting in this direction of the displacement. Here written force in direction of the डिस्प्लेसमेंट, हम फोर्स फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में. तो 25 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिजोल्व करना पड़ेगा, और रिजोल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे एफ कोस थीटा. ओके, एफ इज योर 25 न्यूटन and cos given your 30 degree. So here how much component will be there, 25 cos 30 degree, this one is a component in your horizontal direction, horizontal में ये component act हो रहा है. Clear? And displacement is there, then we will multiply with the displacement. तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हमारा किस डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों को सेम डायरेक्शन में लगा के ही हम वर्क डन हम अप्लाई करेंगे एफ डॉट ds. सो बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट. अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी का करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी मिलती है. सो w इक्वल टू एफ डॉट ds. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड बेटा. So work done is hard, mathematically work done is expressed there f dot ds, you will remove it, then we can write there fd cos theta also. Okay, remove this dot, then here will be fd cos theta. Sorry. So dot product of two vector quantity always give us scalar quantity. Unit of the work, SI unit of the work is joule, and another unit you can say Newton meter. Okay, by using this formula you can say Newton meter. Force SI unit is Newton and displacement SI unit will be meter, that's why we can write it Newton meter. And joule also unit of the work.
So 1 joule you can say work done by the force is 1 Newton is moving in the direction of the object through the distance of 1 meter. Then in that direction of the force we can call it work done will be our 1 joule. क्योंकि वर्क डन क्या होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स 1 Newton and after 1 Newton apply force it will displace their 1 meter distance in direction of the force only, then work done we can call it that is equal to 1 joule. Okay. So dimension formula of work done, how we can write? First we will write their unit of the work done in form of the fundamental units. So force into displacement, force displacement unit को हम fundamental unit में we can write their dimension formula. So how we can convert their force F equal to ma you can write into displacement, then a we can write their meter per second square, then meter mass we can write it in the fundamental unit kg, and acceleration you can write their meter per second square, then into displacement will be meter. So work done will be equal to kg meter square second minus 2. So for this one dimension formula we can write there kg its power is 1, that's why m1 meter square L raised to power 2 and second minus 2, that's why time will be minus 2. Then work done is our scalar quantity. Like this one we can explain this one work done beta. So work done is our force into displacement, how much force we are applying there, then how much displacement will be take place. क्लियर कि अगर मैं क्या कर रहे हैं इधर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसमें मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूं, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. Clear? So we can say work done acting along the horizontal. If someone is asking what is the work done along the vertical component, then work done along the vertical it will be equal to 0. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किसके along हो रहा है, हमने फोर्स अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट का हुआ, हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा. ओके. So see here Gardner pushes a roller through a distance of the 20 meter. If he apply a force of 20 kg weight in a direction of an incline 60 degree of the ground, then find the work done of the wheel. क्यों कह रहा है कि एक गार्डनर है डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस 20 मीटर डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, उसको पुश कर रहा है. pushes a roller, pushes like this one person is there, this one here roller. Then pushing a 20 meter distance, 20 meter distance, he apply a force 20 kg weight in direction of the incline 60 degree. 60 डिग्री क्या है, इंक्लाइन है, ये 60 डिग्री पे इंक्लाइन है. सो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, 20 kg वेट. ओके. सो आफ्टर दिस वन हियर वी कैन राइट देयर फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ दिस वन आफ्टर द रिजोल्व. इस फोर्स को हम क्या है डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे. अभी बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रही, फोर्स अगर किसी एंगल पे है तो उसको उस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा, तभी हमारा वर्क डन निकलेगा. तो हमारा फोर्स तो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, दैट्स व्हाई वी विल फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल. सो हियर वी कैन राइट देयर F cos थीटा. F we can write there 20 meter cos theta. Theta will be equal to 60 degree. So 20 cos 60, then it will be equal to 1 10 Newton. So S is equal to your 20 meter distance था, बट फोर्स इतना लग रहा था 20 न्यूटन. फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा था 60 डिग्री पे. सो हमने इसको रिजोल्व किया तो हमारे पास 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 20. नाउ वी कैन राइट देयर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन राइट हियर 200 मीटर न्यूटन मीटर जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, if a particle moving along x axis from x equal to 0 to 5 under the influence of this one, force is given this one, then find the work done. क्लियर. तो ये कह रहा है कि फोर्स ये गिवन, अब फोर्स क्या गिवन है, इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है. इसका मीनिंग क्या है, एक्स के जैसे जैसे एक्स चेंज वेरी करेगा वैसे वैसे फोर्स वेरी करेगा. क्लियर. एक्स इक्वल टू 0 to 5 वेरी कर रहा है. अगर एक्स इक्वल टू 0 है देन फोर्स इक्वल टू 7. x equal to 1 then what will be 4, x equal to 2 then force will be different. तो मीन्स x के साथ क्या फोर्स वेरी कर रहा है. तो फोर्स वेरी कर रहा है तो हमारे क्या निकाला, 0 से 5 मीटर के अंदर 0 से 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उसके अंदर हमारा वर्क डन कितना हो जाएगा. सो हियर फोर्स इक्वल टू 7 minus 2x plus 3x square. नाउ डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 0 to 5 मीटर, x क्या है 0 to 5 मीटर. सो एज वी नो
वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. देन फोर्स वी कैन राइट देयर 7 minus 2x plus 3x, 7 minus 2x plus 3x bracket dx. Okay, take integration. Now here work can write their force into displacement, but हमें लिमिट गिवन है बेटा 0 to 5 हमें फाइंड करना है. Here if small displacement is dx and small work done is there, तो हमें टोटल वर्क डन हमें फाइंड करना जब डिस्प्लेस करी बॉडी 0 से 5 मीटर तक की. तो हमें टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा आफ्टर पुटिंग वैल्यू. सो हियर कीपिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड टू फाइंड आउट द वर्क done from 0 to 5 meter. So here integration of dw we can write there w limit only, then here put value of force, then dx limit 0 to 5. Lower side we are writing their initial value, down upper side we are writing their final value. तो इसको इंटीग्रेट करके हम सोल्व कर देंगे. आफ्टर दिस वन here we can write there dw equal to our 0 to w and our force value is 0 to 5. changing is there. तो फोर्स में कितना चेंज हो रहा है, 7 minus 2x plus 3x square 2x plus 3x square dx. This one only na, yes, 0 to 5 चेंज हो रहा है. तो हमें टोटल निकालना है. सो इंटीग्रेट dw, then here we can write there initial to final